Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा। जी शुक्रिया। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic stocks snap a 5-session losing streak. Sensex regains 57,600 mark. Nifty settles above 17,600 level. India's port sector growing rapidly, says Prime Minister Narendra Modi. And over 16% growth projected for India's exports during April to February of current financial year. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, पिछले 5 सत्रों से चल रहा गिरावट का सिलसिला थमा। सेंसेक्स 57,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा, निफ्टी भी 17,600 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में बंदरगाह क्षेत्र का विकास तेज गति से हो रहा है और देश में चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से फरवरी के बीच निर्यात में 16% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 5 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। कारोबार उतार चढ़ाव के बीच हुआ और अंत में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि ये बढ़त थोड़ी सी ही रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 79 अंक यानी 0.14% ऊपर उठकर 57,638 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक यानी 0.08% बढ़त के साथ 16,986 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स 0.05% नीचे आकर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.65% की गिरावट हुई। Key domestic stocks ended in the positive territory today, snapping a 5-session losing streak. The key indices swung between gains and losses in volatile trade today, finally ending on a positive note. The Sensex climbed 79 points or 0.14% to close at 57,638. The Nifty gained 13 points or 0.08% to end at 16,986. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.05% down and the small-cap index slipped 0.65%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, 17 rose while 13 fell. Nestle India gained 2.5%, Asian Paints climbed 2.3% and Hindustan Unilever added 2.2%. On the other hand, Tata Steel declined 3.3%, IndusInd Bank fell 2.6% and Bharti Airtel slipped 1.4%. In sectoral indices at BSE, 12 sectors logged gains, while 8 witnessed losses. Utilities sector gained 1.2%, power and oil and gas both added 1.1% each. Metal sector was the biggest loser, plunging 2.7%. Commodities declined 0.9% and IT slipped 0.7%. The overall market breadth was negative as shares of 1,268 companies rose, while those of 2,252 companies fell. A total of 120 shares remained unchanged. डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। आज काफी हिचकूले खाता रहा सूचकांक, कई बार ऊपर कई बार नीचे हमने जाने का दौर देखा। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को?
देखिए, जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है वो थोड़ा वीक हुआ है, खासकर जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से, जो ग्लोबल हेडविंड्स है उनकी वजह से। लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी डे था ऑप्शंस के लिए, तो काफी शॉर्ट कवरिंग भी थी और ऑप्शंस के रोल ओवर्स भी थे, तो उसकी वजह से मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रहा है, जिससे कि लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपनी जो पोजीशंस हैं उनको आगे, कुछ ने रोल आउट किए, कुछ ने आगे उनको सिक्योर ऑफ किया है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो थोड़ी सी वरिंग है बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल डेवलपमेंट्स। लेकिन जैसे कि हमारी मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पीछे के, जब से कोरोना वायरस का एक डाउन टर्न आया था, उसके बाद मार्केट ने शार्पली रिकवर किया, उसके बाद मार्केट काफी तेज गति से आगे बढ़ी है। भले ही कुछ डीप करेक्शंस भी देखे गए हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है जो पॉजिटिव रहा है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से मार्केट्स एकदम काफी डीप करेक्शंस में गए थे, उसके बाद फिर शार्पली रिकवर किए, तो उसी संदर्भ में अभी भी जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो जिस तरीके से जो फाइनेंशियल सेक्टर के चैलेंजेस हैं जो अभी एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो उनके मद्देनजर मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं आने वाले टाइम में। So, Dr. Sharma, today we noticed that SVB and Credit Suisse crisis, they have eased to some extent. Do you think that the market still lack the confidence to hold positions on the contagion fears? Yes, market I think will remain volatile because these are the news-based stability or the volatility. Sometimes some news comes that this is not in favor of the financial markets, then markets becomes more and more volatile and go into the deep corrections. But still hope for the best, that they are saying that they will control the situation, and the futuristic scenario is positive. But still we have to be very, very cautious about the developments in the financial markets, particularly in the advanced economies, and likely contagious on the emerging and developing economies like India and other countries. Two aspects I'm going to be discussing with you. One is because of the unfavorable signs in the global markets, all the investors, most of the investors, are moving to safe havens, such as the dollar and the gold. And the second part of it is the FIIs. They are withdrawing funds from the domestic market in response to Indian rupees depreciation. So will these two aspects continue to hold ground as we move forward? I think depreciation of rupee is not that much creating such cause, because depreciation comes when the outflow is, firstly outflow comes, then the rupee depreciates. So this is the temporary depreciation. Rupee will remain stable at around somewhere between 81, 82. But definitely this scenario which is worrying, that is impacting the sentiment of the investors. As markets are at a high level, like markets are near the or around 5-6% below the peak rates. So that's why some investors or the institutional investors, they sometimes they want to book profit in such uncertain situations. So that's why markets, I think, will take correction or may create volatility, more volatility in the coming times. So what is it for the Indian investors when it comes to Credit Suisse and SVB crisis? How is it going to impact India? I think in the shorter term, the impact will be through the financial channel, not through the real channel, because financial channel is more connected with the global markets. But that will be in the shorter period, because our banking sector is robust and strong. Like during the Lehman crisis, I believe before 15 years ago, there was a Lehman crisis, which was, I think, on the same extent. That was a deeper crisis. But Indian economy was not that much impacted. Our growth rate only decelerated from 9.2% to 7.2%, 2 percentage point deceleration on the GDP growth numbers. But we were better as compared with many economies, and we provided stimulus of at around 3% of our GDP
Other economies provided at around 15-20% of their GDP. But we recovered very sharply. In the next financial year, we were able to post our normal growth trajectory. But the shorter period was very difficult. There was a turmoil in the financial markets, deep corrections, and markets corrected at around 30-40% within few days. And right now, because now we have more safeguards and more robust financial sector and more robust our regulatory environment, so I don't see that again there will be such kind of corrections, and markets may see the volatility or the extreme volatility, but the markets will not see deep corrections. Such kind of turmoils like when the markets correct more than 20-30%. डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर यानी बहुत अच्छा आपने जोड़ा कि 2008 में भी भारतीय बैंकिंग तंत्र अपनी आंतरिक मजबूतियों के कारण दुनिया की अन्य देशों की तुलना में बहुत कम प्रभावित हुआ। अन्य स्थानों पर बड़ी गिरावट हमने देखी, बाजार में भी, पूरे उनके अर्थतंत्र में, जबकि भारतीय बैंकिंग तंत्र भी प्रभावित नहीं हुआ और अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर अपेक्षाकृत कम पड़ा। जी, अभी का जो संकट है उसके आयाम यानी उसका जो कैनवस है वो कितना बड़ा है, और दूसरी बात ये कि शॉर्टर टर्म में यदि हमारे यानी देखा जाए इस पूरे एक साल को या पिछले 2 सालों को, तो भारतीय निवेशकों ने यानी जो नए निवेशक हमारे जुड़े हैं उन्होंने एफआईआईज की लगातार बिकवाली को धता बताते हुए बाजार में मजबूती बनाए रखी है। तो यह जो आंतरिक ताकत यानी आई है भारतीय बाजार में हमारे अपने घरेलू निवेशकों की, वह क्या दर्शा रहा और आने वाले दिनों में बाजार कैसा लग रहा आपको? देखिए, अगर हम पॉजिटिव नोट पर देखें तो पीछे के 2-3 साल में जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, जिनसे हमारा जो बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ, हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत हुआ, हमारे बिजनेसेस स्ट्रांग हुए, हमारे लोगों को कंजम्पशन जो था वो स्ट्रांग हुआ, और जिस वजह से हम एक ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोसिस्टम में, हमारी ग्रोथ, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। तो पॉजिटिव नोट पर अगर हम देखें तो हमें कोई उतनी चिंता नहीं है जितनी कि दूसरे देशों को है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और सेंसिटिव वे में देखें तो क्राइसिस के बाद क्राइसिस, एक तो कोरोना वायरस के बाद फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके बाद फिर अभी ये ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हमें थोड़ा कॉशियस होकर तो चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो तो इम्पैक्ट हुई है। अर्लियर अगर आप देखेंगे तो 22-23 के जो अनुमान थे वो लगभग कोई 8-8.5% ग्रो करने के थे जीडीपी के, जो कि अभी 7% के आसपास ही आके सेट, तो 1.5% जो है परसेंटेज पॉइंट्स कम हम अपना ग्रोथ देख रहे हैं एज कंपेयर्ड विद आवर अर्लियर प्रोजेक्शंस। उसी संदर्भ में अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ ऐसी टर्माइल होती है ग्लोबल लेवल पे, चाहे उसका इंडिया के ऊपर कम असर पड़े, लेकिन उसका जो कंटेजियस है, जो उसके चैनल्स हैं, जो उसका फाइनेंशियल चैनल है, जो उसका ट्रेड चैनल है, जो उसका रियल चैनल है, उसके थ्रू हमारी ग्रोथ तो इम्पैक्ट होती है, जिससे कि ग्रोथ इम्पैक्ट होने से ओवरऑल जो ट्रैजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो लेकिन हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमें कोई उतना टर्मोइल के हमें मार्केट्स बहुत बुरे से गिर जाएंगी, जीडीपी काफी, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो बुनियाद है, वो काफी स्ट्रांग है। So, do I understand that we do not need to worry? We need to worry. We should be worried. Okay. Because this is not a normal thing. This is going to happen in a bigger way if the crisis deepens. But we should remain strong. We should be cautious but strong from the minds that we have a great growth trajectory. We are the fastest moving economy and we have great fundamentals. We have good financial results. We have great forex reserves and our economy is growing and inflation is decelerating. But still we are cautious that global markets may face such kind of situation and some impact, likely impact may be there. Dr. Sharma, we had 5 sessions where we lost quite a bit, and today it was only marginal 79% increase that happened. And we are not looking at anything positive in terms of sentiments in the coming days. I don't foresee
anything positive coming away. Do you think this will entail a change in the style of investment, given the geopolitical situation and given the scenarios of negativity that is happening in the market? Yes, I think this is creating some kind of new era that markets becomes more and more volatile. But markets are not going down and down. Markets recover sharply. There is a sharp movement. Once the markets recover significantly in a single... So single... while you answer this, also tell us, what should the investor do in given scenario? Yes. Firstly, markets will be volatile, extremely volatile. So and markets are volatile since after the coronavirus, markets are comparatively more volatile. Because if there is something positive, then markets go up sharply. They are not giving any time to the investors to enter in the market. Markets sometimes go by 2,000 points and markets make the new peaks. And if there is some negative factor, then markets go down sharply. And the investor makes move to invest and then they again recover sharply. So markets are volatile. My suggestion is that if the markets are going down, you want to invest and you have plans to investment, then you invest. But don't be panic if there something happens at that level also, because ultimately markets have to recover. The nature of markets is go up and go down. Correct. That has to be considered. That this is the nature of the market. Markets will not be static. Markets will be going up and going down. At the downturns, if you want to invest, you can invest. At the highs, if you want to book profit, you can book profit. But don't consider day-to-day movement for the speculation purpose. That don't anticipate that market, this has happened and I want to make profit, now I will buy and tomorrow I will sell. That will not be beneficial for the retail investors. So which are the stocks or themes that which will come as a winner once the... I think India's every sector is promising sector, because we are the bright spot and we are moving ahead. We have a great growth trajectory. But comparatively, government is doing a lot for the mid caps. MSME sectors is always on the main focus of the government to facilitate them. And I think the small mid-sized companies must be on the focus of the investors going forward. And the sectors like we have very, very promising sectors like infrastructure is very promising, and our IT sector is very promising, our pharmaceutical sector is very promising, and our this automobile sector is very promising, because demand is increasing and there are developments that private sector is picking up in the investments. So going forward, I think these sectors will grow more as compared with other sectors. So, but every sector is a promising sector for them, because Indian economy itself is a promising economy. So, but we have to be very, very cautious at this juncture, because this is a difficult time, crisis after crisis, coronavirus, then Russia, Ukraine, now the this financial crisis. So, यानी सलाह हमारे विशेषज्ञ की कि घबराएं नहीं, पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सतर्क होकर अपने फैसले लें। गिरावट की ऊंची लहर नीचे जाती दिखे या ऊपर बहुत तेज गति बढ़ती नजर आए आपको लहरों की, तो उस समय सतर्क होकर फैसला कीजिए, नुकसान न्यूनतम आपका रहेगा। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। संकटग्रस्त स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस के कारण बैंकिंग तंत्र प्रभावित होने की आशंका से आज निवेशकों ने बिकवाली की। हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक सबसे अधिक प्रभावित हुआ, इसमें 1.8% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% घाटे में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.8% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां शुरुआती बिकवाली के बाद में लिवाली का दौर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। लिवाली का यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब क्रेडिट स्विस ने कहा कि वह अपने ऋण की पुनर्खरीद के लिए स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक से 53 अरब 70 करोड़ डॉलर का ऋण लेगा। इन सब खबरों के बीच ताजा समाचार मिलने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 1% और जर्मनी के डेक्स में 0.7% की तेजी देखी जा रही थी।
In the U.S., stocks pared losses late yesterday, but the Dow and S&P 500 still closed lower as problems at Credit Suisse revived fears of a banking crisis. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.9% and the S&P 500 fell 0.7%, while the Nasdaq Composite Index gained 0.1%. Dr. Sharma, how do you expect the Fed to behave in the coming days? I think that is the more uncertain scenario because do you expect them to go soft? I think so, that now they Really? must be soft because sometimes they say that we will be very, very aggressive to create such kind of sentiment that we are going to increase that, but they are not sometimes doing that particular thing. So I believe considering such kind of developments like banking crisis, they must be considering it at priority and also think about the growth trajectory to revive, because inflation will automatically now come down in the coming months. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का बंदरगाह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में तूतीकोरिन वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण की हर वर्ष 11.35% की वृद्धि की उपलब्धियों की सराहना की। बंदरगाह पर 14 मार्च तक 3 करोड़ 60 लाख टन से अधिक सामान की आवाजाही हुई है। डॉक्टर शर्मा, हम देश के पूरे बंदरगाह क्षेत्र पर आपकी दृष्टि को आकर्षित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे किस रूप में ये बंदरगाह यानी पूरी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देखिए, बंदरगाह का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अगर बंदरगाह है तो तभी तो हम पूरी दुनिया से जुड़ पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इंपोर्ट कर पाते हैं, और जो हमारे जो भी पॉलिसी इन्वायरमेंट है, लाइक वी साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ट्रेड को इंक्रीज करना होता है। तो बंदरगाह एक मेन डिटर्मिनेंट है आगे अपना ट्रेड ट्रैजेक्टरी को इंक्रीज करने का। तो जिस तरीके से ग्रोथ है, जैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें और चाहिए, हमारे जो एक्सपोर्ट टारगेट है, जैसे हम देख रहे हैं सरकार का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होना चाहिए 2030 तक, और हमारा करंट ईयर के जो टारगेट था वो $450 अरब का मर्चेंडाइज में हम उसके आसपास एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो तय है। और $1 ट्रिलियन का मतलब यहां से डबल आने वाले 6-7 साल में। तो हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, हमें और बंदरगाह चाहिए, मजबूत बंदरगाह चाहिए, हमें और यातायात के और संसाधन चाहिए, ट्रक्स चाहिए, हमें रेलवे, कंटेनर, सब कुछ चाहिए। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट है कि बहुत तेज गति से एक स्ट्रांग ग्रोथ आई है, ये बहुत ही सराहनीय है और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि हम जो हमारे लक्ष्य हैं, जिस तरीके से जो हमारे नंबर्स हैं हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता जा रहा है। Moving on, India's overall exports are projected to grow at over 16% during April to February 2022-23 over the same period last year. The Commerce and Industry Ministry said the merchandise export is estimated to grow at over $405 billion during the same period, while in the services sector the export will be over $296 billion. The ministry said as India's domestic demand has remained steady amidst global slump, overall imports in April to February 2022-23 are estimated to exhibit a growth of over 19% over the same period last year. It said the country's overall exports in February this year are estimated to be over $63 billion, exhibiting a positive growth of 7.81% over the same period last year. Dr. Sharma, this is really good news that the exports are going to go up Yes, by 16%. This is majorly the support is coming from the services exports. We are very good in the services exports, and we are always in the surplus in the services trade. Though there is some slowdown in the merchandise exports, but the services exports are making it a great success, and we will be able to post overall export trajectory in a positive mode. And our objective, that is $750 billion for the current financial year, including the merchandise and services exports, that is going to be achieved in the coming times, like end of
by the end of March 2023. Moving on, the Bureau of Indian Standards has granted 1,097 licenses to domestic toy manufacturing units, of which over 96% licenses were granted to micro, small and medium enterprises. Minister of State for Consumer Affairs Ashwini Kumar Choube informed this in a written reply to a question in Lok Sabha. This is good for the toy industry. Yes, because toy industry is a very, very upcoming industry, and there are great aspirations that our imports should be reduced and our exports must be increased. So that is the thought process, that we must participate more and more in the global toy industry, and government is doing a lot, and we are increasing with a great zeal, and we will achieve a good number and good participation in the global toy trade. आइए आगे बढ़ें। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने छठे दौर की ई नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध 10,69,000 मैट्रिक टन में से 4,91,000 मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। गेहूं और आटे के मूल्यों पर नियंत्रण के तहत बाजार में सरकार के प्रयासों के तहत छठे दौर की ई नीलामी कल की गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि पांचवें दौर की ई नीलामी के तहत 28,86,000 मैट्रिक टन गेहूं की बिकवाली की गई थी, जिसमें से 23 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं को उठा लिया गया है। The unemployment rate in the country is witnessing a declining trend. The unemployment rate was 4.8% in 2019-20, which was subsequently reduced to 4.1% in 2021-22. This was stated by the Minister of State for Labour and Employment, Rameshwar Teli, in a written reply in Rajya Sabha today. He said the worker population ratio is witnessing an increasing trend as per the latest periodic labour force survey. The worker population ratio has increased from 50.9% in 2019-20 to 52.9% in 2021-22, reflecting higher engagement of people in productive activities. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक आज 5 रुपए घटकर 58,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 140 रुपए बढ़कर 67,435 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़कर $1,936 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $22.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में चमक और तेज होने की हिमायत करते रहे हैं। अब सोना किस दिशा में जाता दिख रहा, और निवेशकों के लिए जो सोने में निवेश करना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सोने में चमक जारी रहेगी, लेकिन अभी जो स्तर है उसमें ये इन्वेस्टमेंट का टाइम था जब सोना जो था 50,000 के आसपास था। उस टाइम पे मैंने सलाह भी दी थी कि ये बहुत अच्छा अभी इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो ग्रोथ है वो काफी फ्रेजाइल है, तो चमक जो है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई पोजीशंस लेना चाहता है तो एक ही बार में पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा, क्योंकि गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहता है, तो थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा वेट करें। अगर प्राइस करेक्ट होते हैं तो फिर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें जो गति है वो काफी तेज रहेगी। Oil prices regained some ground today after falling to 15-month low in the previous session as markets calmed somewhat after Credit Suisse announced of borrowing as much as $53.7 billion and seek to repurchase debt. In intraday trade, Brent crude was trading at around $73.62 per barrel, while WTI crude price was at $67.50 per barrel when reports last came in. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much for being with us, Dr. Sharma. Thank you, sir. And before we close, the headlines once again. Key domestic stocks snap a 5-session losing streak. Sensex regains 57,600 mark. Nifty settles above 17,600 level. India's sports sector growing rapidly, says Prime Minister Narendra Modi. And over 16% growth projected for India's exports during April to February of current financial year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.